श्रीगणेशाय नमः। ओम नमः परमात्मने। अथ श्री विश्वकर्मा कथा प्रथमोऽध्यायः। एकदा मुनियो नेका धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेत्य परिपप्रक्षो सूतं धर्मविदाम्बरं ऋष्यौचुः पुराणज्ञ महाभाग विद्यायानुग्रहं परम् अस्माकं सहसोत्पन्नं संशयं छिन्दिं सत्वरं श्रुतानि बहुरूपाणि विश्रोरतुलते सः तेषां मध्ये मतं श्रेय किं रूपं तनिबोधय। श्रुतुवाच भो मुनियो महात्मानः प्रश्नोऽयं सुमहतरः लोकानां हितमुद्दिश्य कृतः सर्वशुभङ्करः जथोऽहं कथयिष्यामि रूपं सोमहद्भुतं लोकपूज्यस्य देवस्य विष्णोः सर्वजगत्पतेः। अनन्तानि हि रूपाणि तस्य सस्य तपोधनाः तेषां मध्ये महाश्रेष्ठं रूपं शृणुतं सादरं यस्य स्मरणमात्रेण महापातकिनो जनाः तेऽपि पापविनिर्मुक्ता भवेयुर्नात्र संशयः। इममेवानुजोगं हि लोकानां हितप्रज्ञा एकदा क्षीरजलधौ पप्रक्ष श्रीहरिप्रिया लक्ष्मीरुवाच जनानेकानि रूपाणि जगन्नाथ महान्तिते अर्चन्ति परमा भक्त्या भक्ता भक्तियुता भुवि तुल्यानि तानि रूपाणि किमु सर्वाणि वल्लभ आहोस्वित विद्यते किंचित् मुख्यावभेदतः। विष्णुरुवाच यदाहं सर्वब्रह्माण्डं संहृत्यात्मनि वल्लभे स्वानुभूत्यैकरूपेण संस्थो जोगमायया तदैकोऽहं बहुश्याम प्रेक्षे माया वसंवदः जीवानां कर्मभोगाय स्वभावनियतः सदा असंख्यान ब्रह्मलोकादीन रचयामि क्षणेन वै येन रूपेण तद्देवी वच्मि शृणु प्रयत्नतः। धृत्वा अहं विश्वकर्माणं रूपं सोमहद्भुतं परितस्तेजसा व्याप्तं नैकार्कद्युतिसन्निभं ततोऽहं न सृष्टिश्च स्रष्टुकामः प्रियं वदे त्वया ब्रह्मण रहस्यमिदमद्भुतम् कथं पूज्यमिदं रूपं कथं सर्वत्र प्राचरेत विदाञ्चकार संसारः कथंकारमनु उत्तमम्। श्रुतवाच श्रूयतां मुनिभिः सर्वैर्यथा मे करणगोचरः अभूदे समाचारो लोकानां सर्वकामदः। महर्षि अंगिरा नामा तपस्तेपं सुदुष्करं गंगातीरं समासाद्य पार्वती पितुरन्तिके वृष्टावनावृते देशे शीते वारिणि शीतले चंडा तपे निदाघे तु स्थित चक्रे महातपः परम चेतस्तदा तस्य न लेभे शर्म कहिर्चित् इतस्ततो धावति स्म स्वतृष्णायां मृगो यथा अकस्माद् दूध भूदेशा दिव्या वाणी शरीरिणी वृथाश्रमं विधत्से त्वं लक्ष्य भ्रष्टस्तपोधनः। लक्ष्य भ्रष्टः कथं बाणः स्वलक्ष्यं भेतुर्मर्हति तथैव ते गतिर्जाता गतो लोके च हास्यताम् उत्पत्तिः स्थितिः संहारकर्ता लोकेषु विश्रुतः विश्वकर्मा महातेजा लोकाभीष्टवरप्रदः तस्य रूपं महद्दिव्यं पञ्चास्यं दशबाहुकं सरस्वत्या श्रिया पूज्यपादध्यायं दिवानिशम् इदं रूपं पयोब्धौ मां हरिः स्वयं सुसूचत अद्यापि रोमहर्षो मे तस्य ध्यानेन जायते अमायां सर्वकर्माणि हित्वा व्रतमुपाचर तस्मिन्नहनि तस्यैव पूजां कुरु विधानतः गरीयसीं नभो नादादिमां श्रुत्वाङ्गिरागिरं विस्मयं परं प्राप्य ध्यानयुक्तो भवन्मुनिः ध्यायतो विश्वकर्माणं तस्य चेतसि प्राविशत शिल्पज्ञानमयो वेदो अथर्वाख्यः सार्थकः स्वयं आविर्भाव याश्चक्रे तत्त्वज्ञो मुनिराट पराः विमानगाः शिल्पविद्यास्ततो ज्ञानप्रवाहतः सुखयुक्तं जगद्दिदं विश्वकर्मानुकम्पया आवश्यकीयं जानादि वस्तु जातं करोति च इदं लोके महारूपं ततो विश्रुतिमागतं परंपरा क्रमायातं पूते मे श्रवणे व्यधात इदं रहस्यं परमं ऋष्यः शृण्वन्ति ये नराः तेभ्यः श्रवणमात्रेण ज्ञानलब्धिं भविष्यति इदं रूपं महाज्योतिः संसारस्योपकारकं कृतघ्नः किल्बिषी स स्यात् जो न ध्यायति मानवः।
बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। ऋषि औचुः श्रोतां भवता प्रोक्तं चरित्रं विश्वकर्मणः नास्माकं चेतः तृप्तिर्देवानां मृतैर्यथा। इदानीमपि शुश्रूषा सच्चरित्रस्य तस्य च हविषा कृष्णवर्तमेव भूयो भूयोऽभिवर्धते। सुतुवाच समाहितेन मनसा शृणुध्व मुनिसत्तमाः सच्चिदानन्दरूपस्य दिव्याख्यान जगद्गुरोः। आसीत् प्रमङ्गदो राजा प्रजामियो प्रजामसौ रक्ष्यामास धर्मात्मा सर्वकर्म स्वतन्त्रितः। प्रशास्ति लोकं स्नेहेन न खड्गेन कथञ्चन मिथ्यामिषै प्रजानां नो चूषते स्मार्थशोणितम्। दरिद्राभीता लोका मत्स्यन्ते मम शासनम् इति नेतृन्न तस्यासीत हृदयेजत तेजतः। अपात्रदानं दुष्टानां रक्षणं मन्यते स्म सः अतः कृतघ्न दुष्टानां भावात् सुखव जगत। भार्या कमलपत्राक्षी सती साक्षात् सती वसा विदुषी कमला नाम्नी धर्मकर्म व्रतोद्यता। कदाचिद्दैव जोगेन नरेन्द्रस्य कलेवरे प्रादुर्बभूव कुष्ठाख्यो रोगः परमदारुणः। चिकित्स्यमानोऽप्य निशं स्वल्पो न ससाम सः रोगपीडा परितात्मा नृपो व्याकुलतां गतः। ऋषि औचुः पापरोग कथंकारमुपपादि महात्मनः राजवन्तीं वसुमतीं राज्ञो धर्मेण शास्तः। विश्वस्यन्ति कथं लोकाः स्वधर्मो यदि धर्मिणः निरपश्येतादृशी जाता दुर्दशा भो सुदर्शन। सुतुवाच अनादिसिद्ध संसारः कर्तिकर्म विवर्जितः तस्य सूत्रस्य धर्तापि विश्वकर्मा न विद्यते। इत्थं चोपदिदेशायं स्वार्थान्धः पूर्वजन्मनि लोकानां वञ्चनाञ्चुञ्चूनास्तिकानां मते स्थितः। लोकेभ्यः कर्मफलः विश्वकर्मा भवेन चेत् आशीर्भिः प्रेषयेत् पुण्यं मृतायोपकृतः कथम्। ततः पाप प्रवृत्तिः स्यात् जगदुच्छेदनां व्रजेत। अतः पाखण्डिनो अवश्यं भावनी दुर्दशापरा। अनेक जन्मजं कर्म नैकस्मिन् स्याच्च जन्मनि अत्र नो विस्मयः कार्यः शृणुताग्रे वदामि वः। कदाचित् दुःखिनं प्रेक्ष्य राजानं तं पतिव्रता भार्या तद्दुःख दुःखार्ता प्रावोचत सा तपस्विनी। राज्ञी प्रोवाच उपमन्युरी महातेजास्माकं तु पुरोहितः चक्षुष्य उपहतो काण्डे नीतान्तं चान्धतां गतः। तेन ज्ञानप्रभावेण ज्ञाता तस्य प्रतिक्रिया मासे मासे त्वमावस्यां पूजनं विश्वकर्मणः। सर्वकार्याणि संत्यज्य व्रतं कृत्वा विधानतः ब्रह्मचारी फलाहारी धर्म तत्परतो भवत। तद्व्रतस्य प्रभावेण दिव्यदृष्टिर्बभूव सः। इदानीमपि वार्धक्ये तस्य दृष्टिर्न लीयते। दीनाहं पार्थे राजन् तस्मात् तस्य भवानपि पर्यातु दीननाथस्य शरणं विश्वकर्मणः। राजोवाच प्रिय साधुतरं प्रोक्तं निशम्योच्छव सतीव मे चेतयतो ध्रुवां सिद्धिं चित्साहो ब्रवीति मां। सुतवाच तदिनारभ्य नृपते प्रत्यहं विश्वकर्मणः पूजनं वन्दनं कृत्वा भोजनं चचकारः। अमावस्यां व्रतं कृत्वा नियतो ध्यान तत्परः राजकार्याणि अपि त्यक्त्वा विश्वकर्माणमर्चति। विश्वकर्म प्रभावेण कुष्ठनाशो भवत्क्षणात् सुवर्णप्रतिमो भूत्वा राजभोगान् वापसः। तदा प्रभृति तं विद्येवं विश्वकर्माणमीश्वरम् न विसस्मार भूपाल तत्पादाम्भोज खट्पदः। जो जनो विश्वकर्माणं ध्यायते प्रत्यहं सुधि तस्य रोग निवृत्तिः स्यादन्ते मोक्षमवाप्नुयात्।
बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। श्रुत्वाच मुनियो भवतामग्रे चरित्रं विश्वकर्मणः प्रोच्चारितं पुनर्वक्ष्ये जगद विस्मयकारकं वाराणसीपुरे कौचिदस्य नन्दनकार दम्पतिः प्रतिबस्थः स्म सन्तुष्टो जगाद्यात्रासयात्रकौ प्रत्यहं रथः करोऽसौ स्वकर्म कुशलः सुधीः पर्याप्तामृतिमन्वेष्टुं जतते स्म महाकुलः एवं प्रयतमानोऽपि परिभ्राम्य शृगालवत् भोजनाच्छादनाभ्यां तु नालभताभ्यधिकं क्वचित् पुत्राभावात् तदीया च भार्या नित्यं शुशोचः अस्तवीरायाम् अवस्थायां कथं वृत्तिर्भविष्यति इत्थं चिन्ता परिता सा मठेषु तनूजार्थिनी बभ्राद व्याकुला नित्यं निकटे मठनेत्रिणां वृद्धस्मश्रूलपितानां मलेच्छानां निकटे च सा गच्छति स्म दिवारात्रं न लभे क्वापि कामनां कासेषु कुशयूथेषु जमुना तटबालुषु जलभ्रमेण धावन्ति कुरंगीव तदा भवत कश्चिन् मयूरपिक्षानां प्रवञ्चयति चालनः भुर्जपत्रमयैर्यन्त्रैर्लिखितैर्मोहयत्यलं कश्चित् प्रतारयत्येवं तां मुग्धां धृतकोपरः संक्रामति हि मे देहे सिद्धो देवो महाबलः स प्रसन्नो वरं तुभ्यं प्रार्थयिष्यति मा शुचः इत्थमुक्तभाषितां भूतिं दत्त्वा प्रत्यहीनोदगृहम् एवं स्वच्छदशापन्नौ तौ दुःखार्तो हि दम्पती कश्चित् समीक्ष्य व्याचष्ट प्रतिवेशे द्विजोत्तमः ब्राह्मणो अब्रवीत रथकार कथंकारं भ्राम्यसि तस्ततो भृशं सर्वथा बालिशस्त्वं मे मनीषायां प्रतीयसे नैतेर्मिथ्या प्रतिकारैः सन्तानः संभविष्यति न धनं न सुखं किंचित् व्यर्थः श्रमः परिग्रहः अज्ञानिनो हि ते मर्त्याजे काञ्चन्ति मनोरथम् उपायैर्देशैर्व्यर्थो उद्योगे कार्यं कुतः फलम् एतेभ्यो अप्यधिका मूर्खा मलेच्छफुत्कार वह्निना कामयन्ते हि अपत्यानां जीवनं चेन्मदिशृणवः मलेच्छफुत्कार दग्धानां बालकानां कुमातॄणां कुतो बुद्धिः समीचीना धर्मशास्त्रानुसारिणी अतः सर्वान् वृथाकारानुपायान् त्वं परित्यज केवलं शरणं गच्छ दयालो विश्वकर्मणः तस्यानुकंपया साधु सिद्धि संपत्स्यते तव दुःखोच्छेदे प्रभु कोऽपि न विना विश्वकर्मणः कर्मणा फलदाने तु स्वतन्त्रः परमेश्वरः अग्रे पश्चात् विधायैव सुख दुःखे प्रयच्छति यदीयं ते दुर्वस्था दुर्दैव परिपाकतः अन्ययोनिष्वपि फलं दातु शक्तः स शक्तिवान् सुख दुःखे फलं तेषां साधनानि बहूनि च तस्यान्ते केवलं नैव निर्धनता न पत्यता अतो मायां स्वकार्याणि संरुध्य बीजितेन्द्रियः उपोष्य शृणुयाद भक्त्या विश्वकर्म कथां शुभां यावत् शक्यं प्रकुर्वीत परोपकार पराणि तु ध्यायति भक्ति चेतसा सेह लोके सुखी नित्यं जायते पुत्र पौत्रकैः। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। श्रुत्वाच श्रुध्वं मुनियो जोऽयं भूयस्ते कथयाम्यहं सर्वलोकेषु विख्यातं महात्म्यं विश्वकर्मणः उजिन्यामभूत कश्चित् धनञ्जय उदारधि श्रेष्ठो निखिल लोकेषु गरिष्ठो धर्मतत्परः
तस्य कोशो महानासित कुबेरस्यैव धीमतः समुद्रयो सम्पूर्णः मणिमाणिक्यमौक्तिकैः विवाहे व्यवहारे वाभिजोगे रोग संकटे नासित कश्चित् जनो जो न तस्य कोशो व्यवहारत उपकार रतस्यास्य संजातो द्रविणक्षयः विषसाद दरिद्रात्रः पंकमग्नः करीवसः आशा बलियसी तस्य श्रेष्ठिनः प्रबभूवः सहायं च विधास्यन्ति मित्राणि उपकृतानि मे तस्यासा साधुरासा भूदुपकाराय तस्य तु मित्रेण च कृतघ्नेषु न प्रभु कोऽप्यजायत तानि मित्राणि मित्राश्च समजायन्त क्षणेन वै किन्तु तान्येव प्रथमं निन्दूरहन्त तं तदा दृष्टिं प्रच्छाद्य सुहृदो भूतपूर्वा प्रयान्ते विपत्तौ किं सखायस्तु न स्थातुं शक्नुवन्ति अनया नीचवृत्त्या तु विरक्ति समजायत संसारात् सहसा तस्य मनुष्येभ्यस्तथा घृणा अटवी परिव्राज त्यक्त्वा स्वनगरं तदा निष्ठीवनं विधायव कृतघ्नानां मुखेषु च कन्दमूलफलैस्तत्र वृत्तिं चक्रे प्रयत्नतः मनुष्यमात्रम् आवीक्ष्य परिदूद्रावदूरतः एकदा तेन भ्रमता ददृशे प्रभतोदरे बद्ध पद्मासनः शान्तः पुराणो लोमसो मुनिः पशुमत्पागतस्तस्य समीपं स धनञ्जयः कुतूहलमनः सम्यक् निकटे समुपाविशत मुनिस्तं परिपप्रक्ष समीपस्थं धनञ्जयम् महात्मन कुशली कश्चित् कुतो भ्रांत समागतः पशुं मनुष्यवाचं च ज्ञात्वा सृष्टि विस्मये आदितः सर्ववृत्तान्तं तस्मै ब्रह्मर्षये अवदत् एतत् श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठ प्रवाच च धनञ्जयम् पापापचारपरेभ्यश्च कृतघ्नेभ्यो घृणा यदि कथंकारं त्वमेवासि विश्वकर्म पराङ्मुखः तेन त्वं निर्मितः श्रेष्ठिन् सर्वसौख्यपरायणः जो निर्माय जगत् सर्वं व्यवस्था कुरुते तु तां कर्मानुसारस्तस्य तं विस्मृत्य कथं सुखं कृतं हन्ति कृतघ्नोऽपि तं विस्मृत्यैव नास्तिकः अतस्त्वं शरणं याहि विश्वकर्माणमद्भुतं नानारूपाणि सन्त्येव तस्यैव विश्वकर्मणः विटपस्योर्ध्वमूलस्य जगतः कारणस्य च द्विबाहुं च चतुर्बाहुं द्विपञ्चबाहुकं तथा एकास्यं चतुरास्यं च पञ्चास्यं रूपमस्य वै मनुर्मयस्तथा त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ एव च पंचपुत्रा समुद्भूतास्तस्य श्री विश्वकर्मणः अयस्कृतिर्मनूनां च मयानां दारुकर्म च त्वष्टानां ताम्रकर्माणि शीला च शिल्पिनां तथा सौवर्णं तक्षकाणां च पंचकर्माणि तानि वै एते पंचकरूपास्य यज्ञकर्मपरा स्मृताः विश्वकर्माणमीशानं श्रीरामोऽपि पूजयत् सेतुबन्धन काले च तेन सेतुं बबन्धसः श्रीकृष्णो वासुदेवोऽपि द्वारका रचनाक्षणे आनर्च विश्वकर्माणं निर्ममौ तेन द्वारकाम् अतस्त्वमपि तस्यैव पूजनं बन्धनं कुरु सर्वदुःख विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिमवाप्स्यसि इत्थं तस्योपदेशं च श्रुत्वा निवृत्तिमागतः तदिनारभ्य स श्रेष्ठी भक्तो अभूत विश्वकर्मणः तस्य सर्वाणि पापानि दग्धान्यासन तदर्चनात् अन्ते देवत्वमापन्नः स्वर्ग सौख्यं च लब्धवान् जो नरो विश्वकर्माणो भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यायति स सुखी भूत्वा तत्पादौ सम्यगाप्नुयात् जसः पवित्रं खलु विश्वकर्मणः श्रोति जस्तव विदम्बरो नरः उपेत्य सर्वाणि सुखानि भूतले मृते पदं तस्य लभे च शाश्वतम्। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय
गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमान सचंत जत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम जय जय विश्वकर्मा प्रभु जय जय विश्वकर्मा सकल सृष्टि के करता रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय जय विश्वकर्मा आदि सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया जीव मात्र का जग में ज्ञान विकास किया। ओम जय जय विश्वकर्मा ऋषि अंगिरा तप से जब शांति नहीं पाई ध्यान किया जब प्रभु का सकल सिद्धि आई। ओम जय जय विश्वकर्मा रोगग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना संकट मोचन बन कर दूर दुख कीना। ओम जय जय विश्वकर्मा जबरतकार दंपति तुम्हारी टेर करी सुनत दीन प्रार्थना विपत्ति हरि सगरी। ओम जय जय विश्वकर्मा एकानन चतुरानन पंचानन राधे द्विभुज चतुर्भुज दश भुज सकल रूप साजे। ओम जय जय विश्वकर्मा ओम जय जय विश्वकर्मा प्रभु जय जय विश्वकर्मा सकल सृष्टि के करता रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय जय विश्वकर्मा ओम जय जय विश्वकर्मा प्रभु जय जय विश्वकर्मा सकल सृष्टि के करता रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय जय विश्वकर्मा ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितां नमामि भवम भवानी सहितां नमामि भवम भवानी सहितां नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिकं समर्पयामि जलेन मण्डलीकरणं जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षालनम् आरोग्यार्थम् आरार्तिकं ग्रहणम्। ओम तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी तुम ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया तुम ही हो बंधो सखा तुम ही हो जो खिल सके ना वे फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम ही हो बंधो सखा तुम ही हो
तुम्ही हो बंधो सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधो सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वे फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधो सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधो सखा